Okay. Hello everyone. Welcome to IEEE NSUT orientation. I am Sneha Pandey, Chairperson IEEE NSUT from IT branch 3rd year. I have been a part of IEEE NSUT from my first year, and this is one of the best experiences of our college life. Technology always excited me, but with that, I always had the rush of management of events, initiatives, social work. I love interacting with people, presenting my views. In short, I can't be coding for 24 hours. If this sounds relatable, trust me, you have found your soul society. Of course, at least soul societies exist. Trust me. Feel free to drop any question in the chat box. We will answer all of them in the end. And let's go to the PPT. And Ritik, Joint Secretary, IEEE NSUT, will take you forward. Hello everyone, I'm Ritik Yadav, Joint Secretary IEEE NSUT, and I'm from COE branch. So, okay guys, moving forward to the orientation. The first question which comes in the mind is, what is IEEE? So, IEEE is the world's largest technical organization that dedicatedly works towards the benefit of humanity and enhance the field of technology. Its headquarters are in New York City. Here we inspire the community towards the technology and educational activities through the publications, conferences, technology standards, hackathons, learning sessions, and a lot more. Okay, so like coming from the formal introduction, let's have a look on the history and foundation of IEEE. Along back in 1884, this organization was founded by great names in the history of science and invention, Thomas Alva Edison and Alexander Graham Bell. And we have listed a few honorable members as well. APJ Abdul Kalam, Elon Musk, and Narayan Murthy. I'm very sure कि अब तक you guys have a clear picture कि IEEE कितनी बड़ी organization है. And of course, the founders, इन्हें तो कौन ही नहीं जानता होगा. इतनी physics तो already तुमने पढ़ी ली है NSUT में आने के लिए. तो चलो, let's see ahead. Different chapters of IEEE. Basically, chapters are the technical subunit of one or more IEEE sections and society council. Chapters consist of members from one or more IEEE societies and technical councils who share similar technical interest. Different chapters may we have sessions of guest speakers, workshops, seminars, and various social functions. So now let's have a look on different chapters present in IEEE NSUT. We have a IEEE Computer Society, IAS Industry Application Society, RAS Robots and Automation Society, and CAS Circuits and System Society. Apart from the main IEEE and IEEE NSUT, इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं. We have a lot of events under Delhi section, Asia region and different student branches across the India. तो काफ़ी डाइवर्स सा एक्सपोजर मिल जाता है, अनलाइक जस्ट कॉलेज की चीज़ों और इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट करते रह जाना. Now I would like to call Asrita, General Secretary of IEEE NSUT, Student Branch, to proceed with the affinity group. Hello everyone. I'll start with Women in Engineering, which is an affinity group. So IEEE Women in Engineering is the largest professional organization in the world which promotes women in the field of engineering. The name might be misleading, but it has both male and female student members who aim to see a rise in the number of women in STEM. It is a global network with over 30K people from across 100 countries. So WIE plays a vital role. It provides assistance in the formation of new WIE affinity groups in other colleges, recognizes achievements of women in engineering and awards them appropriately, organizes workshops and technical conferences, administers IEEE STAR program to mentor young girls, and many, many more. Now I would like to hand it over to Akshat. Thank you. So guys, now we come to the most important part. What do we do at IEEE NSUT? I hope you all are still listening. Surely not easy after boring online classes. Chalo, let us give you a glimpse of fun and learning we had at IEEE NSUT. Firstly, we had Hack NSUT. It was the second largest hackathon in whole of North India. हम सोसाइटी या दिल्ली लेवल की बात नहीं कर रहे, but North India level.
We had massive participation and mentors from all over the globe. It involved development, AI, ML, blockchain, AR, VR, IoT, and various other tech tracks. Participants got cool swags, and it surely is a dream opportunity to get to participate in such hackathons. Next, we had a workshop based on role of IEEE in professional growth of Ritvik Bansal, who is a product analyst at Sprinkler, and Sukriti Chaudhary, who is software engineer at Microsoft and had interned at Goldman Sachs. हाँ, surely हम सबकी ड्रीम कंपनीज है. नेक्स्ट स्लाइड उज्जवल. हम सब में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार कोडिंग स्टार्ट करेंगे, पहली बार डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, और जिन्होंने 11-12 में नहीं करा उन सबके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है. सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स वी हैव SIGs, मतलब इसमें वी हैव सीनियर्स हु आर गुड इन वेरियस टेक्नोलॉजी, टेक क्लासेस एंड वेबिनार्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड सबको प्रो बना देते हैं. नेक्स्ट वी हैव लर्निंग लीग. ये मेरा पर्सनल फेवरेट था. इसमें वी हैड स्पीकर्स जिन्होंने टेक फोड़ा है, नॉन टेक फोड़ा है, कोर फोड़ा है एंड इवन गेट एग्जाम फोड़ा है. Firstly, we had Mridul Chhabha, a software engineer at Salesforce, and Sanuj at Texas Instruments, and Ritvik from Sprinkler. मेरी सारी टेक, नॉन टेक, कोर की कंफ्यूजन इसी मीट में खत्म हुई थी. Sanidhya sir, with GATE All India Rank 230, took a session and explained about exams, which you can take during and after engineering and apply for higher education. Neha Agarwal ma'am explained about how to prepare your resume, how to apply for different on-campus and off-campus opportunities, what are the do's and don'ts for interviews, which are very important. Shrey Sharma took a workshop on Internet of Things. Shreya Prasad, who is SWE at Intuit and GitHub campus expert, took a session about navigating off-campus and on-campus opportunities. तो ये जो सारी off-campus, on-campus की opportunities है, हमें best placement लेनी है, वो सब इस meet में बहुत अच्छे से clear हो गया था. And Webo Code. It was a front-end development competition for first and second years with Amazon vouchers as the prizes. 670 students registered. I was on the organizing team for this competition, and it is one of the best experiences I've had. Next, we have Arushi. She is joint secretary at IEEE NSUT. Yeah, Joe, sorry. Thank you, Akshat. Now you can see that this is a small glimpse of the cultural events being conducted, Mehfil Sham, and just a heads up that as a chairperson mentioned that we are not just a coding society, we are in each and every department. So this was organized on the occasion of Independence Day. Can you move to the previous slide, please? Yeah, the previous one. So now moving on, product development competition. This was organized in association with Collab and Wise Up Communications, and we received a sponsorship of rupees 10,000, which was given away in the form of prizes, and it was a 3-day long competition for freshers. And moving on to the meme making competition, let's meme it, and the title or the theme for it was future and technology. And you'll be surprised our joint secretary Arushi Dhaya emerged as the meme master. And this was one of the most informative sessions, and I gained a lot from this industry academia collaboration, and not only IEEE NSUT chapter but various sections, IEEE Delhi section, Kolkata section, UP section, and Communication Society, IEEE, they hosted, and 6 different episodes under the project Inspire, ranging from fireside chat shows with famous software development YouTubers, webinars, industry, etc. Now moving on, Arushi will continue. Joint Secretary, IEEE NSUT. Thank you. Hello everyone, I am Arushi Daya, Joint Secretary, IEEE NSUT.
Now let's talk about the most recent event of IEEE NSUT. It is Project Inspire. IEEE NSUT's Project Inspire aims at encouraging women's participation in engineering. The project received the esteemed IEEE Art and WIE Support Fund for 2021. Inspire not only considered of a series of workshops to increase awareness about the important opportunities that exist for women in the STEM domain, but also encourage young engineers to find effective solutions to the challenges that are faced by women in the real world. So, the episode 1 was We Inspire. This workshop was an online convention of 3 speakers who are successful professionals in their respective industries themselves. The guests shared their journeys and how IEEE and WIE played a role in their careers. Then episode 2 was Inspirathon. Inspirathon was a 3-day-long hackathon. The problem set of hackathon consisted of real-world problems that women face. The hackathon was a grand success with over 400 registrations and many splendid submissions from colleges all over India. Winners were rewarded with cash prizes of up to 4,500 INR. This was a perfect platform for like-minded peers to come together and brainstorm ideas, develop new technology, and simultaneously strive to tackle some real-world problems. Then episode 3 was She Aspires. IEEE NSUT conducted offline workshops in government schools to spread awareness about science and engineering. We aim to encourage the young and budding tech enthusiast within the girl child who is fearful to opt for engineering as a career due to some misconceptions and lack of awareness. Some creative projects by student members were also shown to instill a sense of curiosity and relatability within the school children. In the episode 4, we had Ms. Mehak Garg, an MBA graduate from Stanford University, COO and co-founder of Uday, for which she was also featured in the prestigious Forbes 30 Under 30 list. She is also an alumnus of NSUT. Episode 5 was on benefits of WIEAG. This online session aimed to help and inspire fellow IEEE student members in the Delhi section and R10 to become IEEE WIE members. Then in episode 6, we had Miss Kirti Purswani, who is a software engineer at Intute and has a thriving YouTube channel with over 30,000 subscribers. So IEEE NSUT's upcoming event is DELCON 22. The maiden IEEE Delhi Section International Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering is one of the finest international conferences covering broad topics in the areas of electrical, computer and electronics engineering. And this year it will be organized by NSUT itself. So most probably DELCON 22 hybrid mode mein hogi. So it is gonna be a great opportunity for the student branch members to host such a fine conference. So now we have the SMPs or the Student Mentorship Program. The IEEE Student Mentorship Program is a live guidance program in which freshers are divided into groups on the basis of their interests. They are divided into groups based on web development, app development, and also programs in ML and AI, where they are guided by their sophomore mentors. Groups work on live projects ranging from web development projects to machine learning models to core electronic projects as well. Herein, the experience of seniors, including the mistakes they made and the lessons they learned, are accumulated over the years and can act as a guidebook for the freshers. Now, I hand over to Joint Secretary Ananya Mishra. Thank you. Okay, hello everyone. My name is Ananya Mishra and I'm from Instrumentation and Control Engineering, second year. So till now, you all might have got some idea about what IEEE is and what we do here at our student branch. So let's move on to the various external benefits that one can avail of by being an IEEE member. So the first one is like IEEE volunteering. So ये एक website है dedicated to IEEE members only. And as the name suggests, काफी सारी opportunities available है there. Small scale से लेकर international organizations and events तक. So you can volunteer for a web development, content, or graphic design role, or like any role you want. You just have to show your willingness. All you have to do is go to this website and apply. The only requirement is that you should be an IEEE member. And all these volunteering opportunities are listed by various IEEE professionals and industry experts. So the networking opportunities are enormous here.
In my first year, I also volunteered for one organization known as IEEE Puzzlers, and it was started by a professor from USA. We have many IEEE student members in our team, and they all come from countries like USA, Lebanon, Sri Lanka, England, and so on. So the point being is that you get to connect with people from abroad and grow your network, not just nationally but internationally. So you guys must be wondering कि मैं as a volunteer करता क्या हूँ IEEE Puzzlers में. So we work on various kinds of aptitude-based puzzles and post them on IEEE Collaborative. So what is Collaborative? I'll tell you in brief here that it is like LinkedIn only, but only for IEEE members, and it has many more features than what LinkedIn can offer. मैं interact करता हूँ IEEE puzzlers के team members से collaborative पे, as we have workspaces there where we can engage with our inclusive group, and workspaces पे puzzles बनाने के बाद we post it in the public section of collaborative so that other IEEE members can solve it or share and share these puzzles among their friends. So तो हाँ, collaborative में आप लोग connection request भेज सकते हो other IEEE members को and even professors को from across the globe. So काफी सारी communities भी है there in which you can take part and learn more about various tech topics like be it machine learning, artificial intelligence, blockchain, etc. So yeah, IEEE provides you with a perfect platform for networking, not only at the local level, but also at the international level. Now we have Vidit, who will guide you through some more external benefits of IEEE. Thank you. Hello everyone, myself Vidit. So let us start for AISYWLC, founded in 2000. The AISYWC has grown over the years to become the biggest event on the calendar for IEEE members in India. It is a conglomeration of inventors, professionals, entrepreneurs, visionaries, and some of the greatest minds in the country. By the bringing together amazing people from all walks of life, the ISYWLC empowers its participants to be inspired, collaborate together, and innovate for tomorrow. I, with it, along with three other joint secretaries, Ritik, Chirag, and Akshat, were nominated for AISYWLC for our student branch by our student branch to represent IEEE NSUT as a student branch associate in AISYWLC 21. Hosted by IEEE Kerala section, SBA from all over the India were invited to participate in the event and got a 3-day stays at 5-star hotel. But क्या करूं guys, ये COVID की वजह से हम enjoy करने ही नहीं देती. We had attended all the events online and we still enjoyed a lot. We had a movie night and a DJ night too. We got a chance to connect with other student branch associates and speakers. These are some our ID cards and certificates. Now I would like to hand over the next to Pranav, who is our joint secretary and also a web administrator at Delhi section. Okay, so hello guys. Do react in the chat box to show your activeness. So I am Pranav Chauhan, currently a joint secretary of IEEE NSUT student branch and also a web administrator at IEEE Delhi section. So firstly, what is IEEE Delhi section? So IEEE Delhi section is one of the 13 sections of India mentoring students from Jammu and Kashmir, Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Haryana and Himachal Pradesh. So Delhi section हमारा directly NSUT student branch से connected है. In the sense that NSUT student branch is one of the most active branches that regularly participate in the volunteering work that IEEE Delhi section provide to them. So it conducts various events throughout the year that help you in different aspects. The first one is networking. So you get a chance to contact community partners and speakers from various organizations, which means in the end getting yourself associated with a DevRel or outreach role. So अगर तुम्हें DevRel developer advocate या outreach role में जाना है, so it's worth it to join IEEE and SUT student branch. And the second one is programming and development. So you get a chance to work on live projects like building or updating the website for section from scratch. Like अगर मैं अपना experience बताऊँ तो I'm currently working on the website of IEEE Delhi section that would be launched soon. So तो ऐसी opportunities के लिए तुम्हें IEEE Delhi section जरूर join करना चाहिए. And for that you need to join NSUT student branch. And the third one is exceptional perks. So you not only volunteer in your college, but the selection in IEEE Delhi section brings ample opportunities of volunteering from other colleges as well. Like जो भी other societies हैं वो तुम्हें college premises में limited रखेंगी, but हम क्या करते हैं, हम हर एक जो भी event जो दूसरी IEEE कराती है अपने colleges में, वो भी opportunities तुम्हारे पास में लेके आएंगे.
And the fourth point is referral opportunities. So IEEE Delhi section includes various professor and student that might be your first preference for getting recommendation during college internship or placement. So अगर कभी ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास में ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज नहीं है या कोई अब तुम्हारी ड्रीम कंपनी है जो कैंपस में विजिट नहीं कर रही है, देन यू कैन ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट देम फॉर अ रेफरल अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर वेरियस students who are currently doing an intern or in the corporate world, like some of them are in Walmart, Flipkart, Amazon, interning at Adobe, JP Morgan and Chase. So it's a benefit to provide होते हैं. And the fifth point is management and logistics. So regular mentorship session helps you understand the event workflow that might be a key factor when you apply for outreach, developer advocate roles. So IEEE Delhi section not only brings opportunities but recognitions depending upon efforts that you put in uplifting the community. सो IEEE दिल्ली सेक्शन का मेजर बेनिफिट ये है कि अगर तुम्हारा ड्रीम है कि मैं किसी कम्युनिटी को लीड करूं या एटलीस्ट एक बार चांस मिले अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, देन एटलीस्ट तुम्हें IEEE दिल्ली सेक्शन जरूर ज्वाइन करना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So interesting benefit of IEEE membership. So the first one is be a part of global community. So IEEE is होता है global community, और अगर एक global community then you can understand how much networking skills you would be getting after joining it. The second point is IEEE.org Gmail account. So जब अगर तुम IEEE membership के लिए apply करते हो, then of course you will be getting some additional perks like invitation to regular events that are conducted by other IEEE communities and direct access to research articles, newsletters, and the third point is IEEE Resource Center. So काफ़ी सारे जो इंजीनियरिंग सोसाइटी मटेरियल्स होते हैं, लाइक अगर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इन सब रोल्स में जाना है, देन ये तुम्हें वीकली कंटेंट प्रोवाइड करता है IEEE. That is of course after getting the membership of IEEE. Fourth point is access to IEEE website template. So अगर तुम न्यूबी हो वेब डेवलपमेंट में, देन IEEE ने एक टेम्पलेट बना रखी है पहले से, जो तुम ऑफकोर्स अगर NSUT स्टूडेंट चैप्टर में एनरोल करते हो, देन वो वेबसाइट टेम्पलेट तुम यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में भी. दैट वुड बी ऑफकोर्स ईजियर फॉर यू टू स्टार्ट विद द वेब डेवलपमेंट. And the fifth point is IEEE TV and IEEE Press. So these are some of the benefits. like अगर ये तुम्हें डायरेक्टली कोई भी अगर न्यूज़ अपडेट चाहिए या जो भी कोई भी न्यूज़ या जो भी तुम बेसिकली IEEE TV एंड प्रेस पे प्रोवाइडेड होते हैं तुम्हें. IEEE एक्सप्लोर एंड स्पेक्ट्रम, ये वीकली मैगजीन्स IEEE के, जहाँ पे जो भी तुम्हारे वाइट पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, अगर तुम भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो और अपना आर्टिकल लिखना चाहते हो, देन वो अगर वो आर्टिकल अच्छा है, देन वो ऑफकोर्स इसमें पब्लिश होगा, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू. एंड देन कम्स IEEE एक्सट्रीम. तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. सो IEEE एक्सट्रीम क्या होता है? ये एनुअली हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है IEEE, जिसमें 24 आवर चैलेंज होते हैं. इसमें तुम्हें टीम बनानी होती है 3 मेंबर्स की, एंड तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी. इफ यू सॉल्व देम, then there are of course some perks that you could either check on the IEEE Extreme website, or we will guide you through that. And the last point is IEEE offers a variety of scholarship, travel grants and fellowships for IEEE student members. So scholarship जो provide करता है, जो major scholarship है, that are IEEE V scholarship and Richard E. Merwin scholarship. So IEEE V scholarship में $10,000 का जो फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी स्कॉलर्स होते हैं इसके. एंड फॉर रिचर्ड ई मर्विन स्कॉलरशिप यू विल बी गेटिंग across $1,000 for your to pursue your education. So that's from my side. Thank you. I would summarize कि अगर तुम्हें community को lead करना है, do join IEEE NSUT student branch. Okay, so my name is Ishita and I'm from COE. So now coming to our accomplishments, we have received IEEE Regional Exemplary Student Branch Award 2020 and Daryl Chong Student Activity Bronze Award for Hack NSUT 2019. Our professor Prerna Gaur, who is also our branch counselor and the director of East Campus and also the former chairperson of IEEE Delhi section, has received Best Branch Counselor Award from IEEE Delhi section. Ma'am was also selected as treasurer of IEEE Delhi Council and was also the winner of Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter Advisor Award. Now, Ritwik Bansal, the Vice Chairperson of IEEE India Council Student Coordination Team 2021, has received Outstanding Volunteer Award from IEEE Delhi section
and was also the winner of IEEE Region 10 Young Professionals Revolution 2021 program. Our members were also felicitated with the following volunteering awards. Mridul, Michael, Sanidhya, and Sanskar were given Outstanding WIE Volunteer Award, and Sukriti, Mridul, and Kunal were given Outstanding Student Volunteer Award. Now, some more awards and grants which are offered by IEEE are IEEE Standards Education Student Grant, High Performing Student Branch Chapter Program, Graduate Fellowship Award, Microwave Engineering Fellowship, UG and PG Scholarship Programs, IEEE Student Leadership Awards, and many more awards are presented by different chapters at NSUT. IEEE. Now, our chairperson Sneha and vice chairperson Vibhu will guide you more about our membership. Hello everyone. So I'm back और अब देखते हैं like the most question that we got was कि fee कितनी है, क्या fee है ना? So here is it, ठीक है? Like we have a general membership. Like तुम लोग कहते हैं IEEE की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो what is the fee. Like अगर तुम वहाँ से डायरेक्टली कोई IEEE का मेंबरशिप का फी लेता है then it is almost I think 2000 or something like this. I think almost 2000. But here, since you are joining from IEEE NSUT, which is a reputed college, and we are a recognized student branch of IEEE, we can avail you 50% discount on all means whatever means you can think of. Literally, this membership provides you everything. You all may have listened to the PPT that we started. Everything, scholarships, awards, and CS membership. There are various societies. Someone was writing about like I don't remember geoinformatics maybe means ऐसी कोई ब्रांच का कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कोई GI राइट शायद जियोइंफॉर्मेटिक्स ही है तो फिर उस सोसाइटी की भी बहुत सारे कहते हैं वो है मीन्स लाइक जैसे ये सोसाइटी जो एकदम कोर सोसाइटीज आ गई जैसे एक सेकंड में चैट बॉक्स खोल लेती हूँ हाँ जो क्या कहते हैं हाँ ये GI स्टूडेंट्स ही था ना हाँ तो जो भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स की है या फिर जो भी MBA सोसाइटी हो गई जिनकी ये वैसे ज्यादा सोसाइटीज मतलब ब्रांचेस हो गई GI या फिर MBA या फिर बाकी एकदम कोर ब्रांचेस तो उनके कहते हैं स्पेसिफिक सोसाइटीज नहीं है बट IEEE मेंबरशिप के साथ तुम्हें ये चैप्टर्स मिलेंगे जिससे कि तुम अपनी ब्रांच स्पेसिफिक सोसाइटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और लाइक तुम्हें सिर्फ कॉलेज में तो बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो GI में इंटरेस्टेड होंगे या फिर कोई भी सोसाइटी ले लो है ना कोई भी कहते हैं कोई भी फील्ड ले लो सोसाइटी क्यों है ना कोई भी फील्ड ले लो उसमें बहुत कम इंटरेस्टेड मिलेंगे बट यहाँ पर तुम्हें कहते हैं इंटरनेशनली लोगों से कनेक्ट होगे डिफरेंट कॉलेजेस से कनेक्ट होगे IEEE के ब्रांचेस जहाँ भी तुम सोच सकते हो ऑलमोस्ट जिस भी बड़े कॉलेज में हर जगह है उनके स्टूडेंट ब्रांचेस तुम गूगल करके सर्च कर सकते हो उनको जैसी कहानियां नहीं बना रहे राइट तो फिर उन सारी जगहों पे तुम कनेक्ट हो सकते हो मेन इंपॉर्टेंट यही है तो बस इसको ऐसे जज मत करो 1000 रुपीज इसलिए देखो कि 1000 रुपीज कितना वैल्यूएबल है तुम्हारे लिए राइट हम ये कहते हैं हम फॉर्म तुमसे नहीं ले रहे हमारे पास नहीं जाएंगे ये एक्चुअल IEEE के हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि हम तुमसे पैसे लेके काम कराएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पूरी सोसाइटी तुम्हारे लिए तुम्हारे मेंटरशिप वगैरह के लिए है बट इस सोसाइटी के पार्ट होने के लिए तुम्हारे IEEE की मेंबरशिप होना जरूरी है सो ये मेंबरशिप तुम IEEE के लिए ले रहे हो और उसके साथ तुम्हें काफी सारे ब्लॉग्स वगैरह जितने कोलैबोरेटिव के पार्ट से सारे लिंक्डइन का पार्ट इन सब की चीजें तुम्हें मिल सकती है ये देखो क्या कहते हैं मैं तुम्हें कह रही हूँ IEEE.org पे वेबसाइट पे जाकर देख लो तुम्हें तुम्हारी कोई भी बात झूठ लग रही है फिर कुछ भी लग रहा हो कि ये लोग पैसे लेके पता नहीं क्या करेंगे हमारे पैसों का तुम खुद एक्सप्लोर कर लो राइट तुम सारे कहते हैं NSIT में वी कैन ट्रस्ट यू कि तुम एक्सप्लोर खुद करके खुद के ऊपर विश्वास करके फिर कुछ भी डिसीजन लो अब मैं कहते हैं तुम जो फॉर्म था उसमें हमने एक क्वेश्चन Q&A का वो डाला था कि जिसके भी क्वेश्चन हो वो ले लें तो हमारे पास कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं राइट तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है व्हाट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब देखो हमारे पास क्या क्या होता है सबसे पहले तो हम लोग रिक्रूट करते हैं एक एग्जीकॉम टीम अपनी राइट तो जो हमारी एग्जीकॉम टीम होती है उसी का मेन रिक्रूटमेंट है फिर वो एग्जीकॉम मेंबर्स ही अपने सेकेंड ईयर्स में प्रमोट होकर जॉइंट सेक्रेटरीज बनते हैं
फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी से कहते हैं प्रमोट होके थर्ड ईयर में चेयरपर्सन वाइस चेयर PORs पर जाते हैं, राइट। तो फिर अब हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है हमारे पास यही डिपार्टमेंट है, GD, कंटेंट, वेब डेवलपमेंट और क्या कहते हैं टेक के डिपार्टमेंट्स हैं, कोर के डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स है, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है, हमारा RAS सोसाइटी अगर तुमने सुना होगा तो RAS सोसाइटी है, कैश चैप्टर है तो उसमें भी हमारे पास है कहते हैं है चेयर वाइस चेयर सारी पोजीशंस हैं, राइट। तो फिर अगर तुम क्या कहते हैं किसी एक उसके लिए एम कर रहे हो स्पेसिफिक टेक नॉन टेक है ना अगर पोजीशंस के लिए, तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक वी आर वेरी ओपन टू एवरीवन, वी बिलीव दैट दे विल कम एंड दे विल लर्न एंड देन ओनली दे विल वर्क। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कहते हैं कि तुम्हें ये चीज आनी चाहिए हमें ज्वाइन करने से पहले। मैंने GD सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद ही सीखा है और बाकी भी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज ने काम करते करते ही सीखा है, ठीक है। तो कोई ऐसा हमारी कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है कि पहले जाओ परफेक्ट GD सीख के या फिर कंटेंट सीख के आओ तब यहाँ पे आना, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन जो सबने पूछा सबसे ज्यादा, प्री रिक्विजिट्स और एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस इफ वी वांट टू जॉइन योर सोसाइटी। ये तो शायद क्लियर हो गया कि बस तुम्हारे पास विल होना चाहिए काम करने के लिए, हमें ऐसे मेंबर्स चाहिए जो डेडिकेटेड होकर एकदम अच्छे से काम करे। तुम हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज को देख सकते हो भाई उन्होंने कितनी मेहनत करी है, इतनी अच्छी PPT बनाई है, ठीक है। तो बस हमें यही चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, विल चाहिए कि भाई काम करने वाला इंसान होना चाहिए। काम ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, बस होना चाहिए, ठीक है। फिर है एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, यार यहाँ पे वर्किंग एंड मेंटरशिप इतनी पर्पस। अच्छी है कि लाइक आई वाज अ मैकेनिकल और मेरे पास 12th क्लास तक भी CS नहीं थी, बट यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ईयर में IEEE मिली एंड अब मेरे पास SDA इंटर्न है। तो ये जितना मुझे कोडिंग सिखाया है मैं IEEE को वो करूँगा। हाँ लाइक तुम्हें पता है क्या कहते हैं, विभू हमारा कहते हैं वेबसाइट मैनेज कर रहा है, मीन्स लाइक बहुत बड़ी चीज होती है, लाइक डेलकॉन मैनेज कर रहा है, ही इज द चेयर ऑफ डेलकॉन। डेलकॉन अगर तुम सर्च करो थोड़ा सा तो इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ IEEE, जिसमें कहते हैं सिर्फ इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से प्रोफेसर सब लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, बहुत सारे लोग आते हैं, रिसर्चर्स, है ना। तो मीन्स ये सारी चीजें ही तुम्हें सिखाती हैं, लाइक स्कूल तक तो अब कर लिया जो करना था, पढ़ने वाला काम हो चुका है, अब थोड़ा लीडरशिप, थोड़ी यार कहते हैं वर्किंग एबिलिटीज की कैसे तुम्हें सोसाइटी में थोड़ा प्रिपेयर करना तुम्हें यार, सोच लो खुद, है ना। लाइक कंपनी में जाके तुम्हें काम करना है तो क्या कहते हैं उसके लिए थोड़ा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हो, थोड़ी पॉलिटिक्स देख लेते हो, थोड़े लोगों के टॉन्ट सुन लेते हो, काम करना सीख लेते हो, किसी के अंडर किसी से काम करवाना सीख लेते हो, ये सारी चीजें बहुत मस्त हो जाती है यार सोसाइटीज में। अभी भी क्या क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा, ऑल दैट लास्ट डे टू पे एंड वेयर टू पे द फी। अरे यार रुक जाओ हम सब बताएंगे, ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस IEEE का फ्रेशर्स ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तुम्हारे सीनियर्स हैं हर चीज के लिए। और कोई क्वेश्चन जो सच में इम्पोर्टेंट हो, अगर पता है किसी का सच में कोई लग रहा हो ना कि मेरा क्वेश्चन सबसे अलग है और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, ये तो पता नहीं फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो Q&A सेक्शन में पूछ लो यार, क्योंकि चैट से सब कुछ अलग करना बहुत डिफरेंट हो रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन लो मैं एड्रेस करना चाहूंगा। लाइक मेरे को हाँ कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, तो लाइक अभी तुम्हें किसी चीज की मतलब टेंशन वो करने की जरूरत नहीं है। वंस अगर तुम इंटरेस्टेड हो, लोग मेरे को IEEE उसके स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं जहाँ से मेंबरशिप वो करनी है, तो वो उसकी डिटेल्स पूछ रहे हैं, इस फील्ड्स में क्या भरे हम, एडमिशन नंबर ये एंड ऑल, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद कुछ भी मत करो गाइस, मैं बता रही हूँ तुम लोग कुछ भी नहीं करने की टेंशन लेनी है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अपनी तरफ बस तुम देख लो कि हाँ ठीक है ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, हमें चेक कर लो बस, ठीक है। तुम्हारा काम है सिर्फ हमें क्रॉस चेक करना, अगर तुम्हें कुछ गलती लगे तो हमें पॉइंट आउट भी कर देना, और बाकी हम तुम्हें सब बताएंगे कि तुम्हें कैसे मेंबरशिप लेनी है, कैसे क्या करना